Good morning, children. Our chapter number is 7 and chapter name is Frequency Distribution Table and Graph. So, in that we have completed exercise 1. We have to start exercise 2 also. The first part of exercise 7.2 we have finished in the previous class. Now we will continue the remaining problems. We have to finish the first problem in previous class. So second problem is similar to first problem. So second problem is your homework problem. So coming to next question. Our question is third question. What is the question? Class intervals in a grouped frequency distribution are given as class interval. So class intervals in a grouped frequency distribution are given. Grouped frequency of distribution हमको दे दिया. वो क्या है? 4 to 11, 12 to 19, 20 to 27, 28 to 35, 36 to 43. तो ये हम लोगों को डेटा दिया. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा? राइट द नेक्स्ट टू क्लास इंटरवल्स. बोले तो नेक्स्ट 2 क्लास इंटरवल्स अपन लिखना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच क्लास इंटरवल्स. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल क्लासेस. क्या लिखो बोल रहा अपन को? क्लास बाउंड्रीज ऑफ पूरे क्लासेस का क्लास बाउंड्री लिखना है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास. तो ईच क्लास के क्लास मार्क्स क्या है पूछ रहा. तो अपन को ये क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल क्लासेस. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास. So given class intervals are 4 to 11, 12 to 19, 20 to 27, 28 to 35, 36 to 43. What is the question? Write the next 2 class intervals. क्या पूछा हमको? Write the next 2 class intervals बोल के पूछा. तो we should write next 2 class intervals. Here how many there? 1, 2, 3, 4, 5. ऑलरेडी हमको कितने दिया? 5 क्लास इंटरवल्स दिया और रिमेनिंग 2 उसके नेक्स्ट 2 मालूम करो बोल रहा अपन को. तो 5 क्लास इंटरवल्स आर गिवन. फाइंड 2 more class intervals. After that let go with the next 2 class intervals. Find the first. So what are the next 2 class intervals? These are the given class intervals. So the next 2 class intervals are, see here, यहाँ पर 11 है. तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल किससे शुरू हो रहा? 11 के बाद 12. फिर यहाँ पर सिमिलरली 19 के बाद 20. तो वैसे 27 के बाद 28. फिर 35 के बाद 36. तो यहाँ पर क्या है? 43 के बाद नेक्स्ट क्या आता? 44. सो फर्स्ट अपन क्या लिखना? 44. फिर नेक्स्ट नंबर अपन को मालूम करना था डिफरेंस बिटवीन दिस 2. तो ये दोनों को माइनस करना. माइनस करें तो 43 माइनस 36 क्या आता अपन को? 43 माइनस 36 इक्वल टू 7. तो ये 7 किस में ऐड करना? 44 में. 44 प्लस 7 इज हाउ मच? 51. So our first interval is 44 to 51. Next again after 51 is next number of 51 is 52. So 52 plus 7, 52 plus length. How many difference are there in 7? So 52 plus 7. 52 plus 7 is 59.
So our 2 class intervals are completed. First class interval is 44 to 51. Second class interval is 52 to 59. In question, first we ask it write the next 2 class intervals. तो ये 2 class intervals अपन find out कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा अपन को, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल. तो अब नेक्स्ट क्या मालूम करना अपन, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास लेंथ. सो क्लास लेंथ इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. सो व्हाट इज अपर लिमिट, 11 प्लस 4 by 2, 14 by 2. So 2 ones are 2 sevens are 14. So our answer is 7. Class length is 7. This is our first answer. What is second question? This is second question. Write the class boundaries of all classes. क्या पूछ रहा, write the class boundaries of all classes. All classes के class boundaries find out करना है अपन को. So we will go for that by using table. अपन सेकेंड क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे, क्या है सेकेंड वन, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर रहे. क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करना तो अपन को एक टेबल, बाय यूजिंग टेबल अपन फाइंड आउट करना पड़ता. तो फर्स्ट ड्रॉ ए टेबल. ए ड्रॉ डिवाइडेड three columns. First column is class interval, second column is class boundaries, third column is class marks. So first column class intervals. How many class intervals are there in our question? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 class intervals are there in our question. First class interval is 4 to 11. Class intervals also known as class limits. Next, write class boundaries. How to write class boundaries? Only one thing we should do. What? Subtract 0.5 from the subtract 0.5 from the lower limit and add 5 points from the upper limit. मीन्स 0.5 लोअर लिमिट में से 0.5 निकाल देना और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना. तो अपन को क्या आता, क्लास बाउंड्रीज आता. फॉर एग्जाम्पल 4 - 0.5 करे तो 3.5 टू 11 + 0.5 करे तो 11.5. Similarly, what is our next class interval? 12 to 19. So minus 12 minus 0.5, 11.5 to add 0.5, 19.5. So this is our class intervals. This is our class boundaries. So next, coming to the next, class marks. What is class marks? Class marks equal to upper boundary plus lower boundary by 2. That means class marks will be average of class boundaries. So 3.5 plus 11.5 by 2 is 7.5. Next, 11.5 plus 19.5 by 2 equal is 15.5. Next, 19.5 plus 27.5. आप लोग ऑब्जर्व करें, upper boundary of this class and lower boundary of this class are same.
See, 11.5, upper boundary of this class is 11.5, lower boundary of this class is 11.5, and upper boundary of this class is 19.5. This is also 19.5. The upper boundary of this class and lower boundary of this class are same. So, our third question is completed. Thank you.